स्वागत के क्रम में हम आग्रह करना चाहेंगे सुश्री प्रीति उपाध्याय, सीनियर एडवाइजर AIGGPA से, कि वे हमारे साथ मंच पर उपस्थित श्री मुकेश चंद्र गुप्ता जी, प्रमुख सचिव योजना एवं सांख्यिकी विभाग, मध्य प्रदेश शासन को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम आग्रह करना चाहेंगे श्री प्रभाकर साहू जी, सीनियर लेड इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, नीति आयोग से, कि वे स्वागत भाषण एवं कार्यशाला की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करें। Good morning, everybody. A very warm welcome to all present. Let me take this opportunity and thank each one of you for taking out time from your busy schedule to participate in this important event. On the behalf of Niti Aayog and Atal Bihari Vajpayee Institute of Good Governance and Policy Analysis, I would place on record our sincere thanks and gratitude to Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Sri Manor Jadhav ji. Thank you so much for agreeing to be the chief guest for this important function. The objective of this workshop, accelerating manufacturing growth in India, is being organized in collaboration with Government of Madhya Pradesh and AIGGPA. There are basically two objectives we are trying to fulfill. One is to share the best practices in manufacturing across states. And the second session, we are going to discuss about the industry needs. What are the gaps in manufacturing that is necessary to be filled, such as infrastructure, skilling, policy regulations, and all sorts of ease of doing business that are very important for manufacturing growth to take place. Now the context, why is it so important to accelerate manufacturing growth? What has happened over a period of time, if we look at the growth pattern of all the big economies, they have moved away gradually from agriculture to industry that is dominated by manufacturing and then services. But in India's case, we are predominantly an agricultural economy before 90s. But after 90s, it's mostly services-led growth without significant improvement in manufacturing. That is where you end up today, where almost close to 50% of the labor force are still in agriculture. And they are not in a position to really benefit from the services-led growth, which needs certain skills, educations, and it's kind of, not heavily labor-intensive in nature. Now, all this services-led growth, what are the services? Whether it is travel, transportation, commercial services, insurance services, banking, and all that, they are output themselves, but they are used in the process, process as inputs. So the economic activities are absolutely important, and there is a strong linkage between the industry and services. So for that, if you want to have a sustained, structured, and balanced growth, we need to accelerate manufacturing growth. That's absolutely necessary because almost every year, 10 million young workforce, they are entering the job market. And they are not having the required or requisite skills to benefit only from the services sector. That is where the importance of manufacturing growth. And there is also an absolute need right now, though we have fulfilled most of the basic requirements of the larger sections, almost close to what you call 100%, but it is the next set of things like bringing the inequality and creating decent jobs. In that context, there is a need to move large chunk of labor force from agriculture to manufacturing. So in this context, it's absolutely important that we work on this. The second point is, India is in a very bright spot. Today, average Indian age is 29. The China is 39, Europe is 42. The whole world is aging when India is young and aspirational. In fact,
most of the countries, they have given away labor-intensive manufacturing because of unfavorable demographic composition for them, and this is an opportunity for India because we have the favorable demographic composition. And from 29 to 39, it takes 30 years. So next 30 years belongs to India. In fact, some of the reports have suggested that total population of all these countries would be having negative. The total population of China would go down almost more than 60% by 2050. So what we have the labor force, and unless until we improve the productivity of the huge manpower we have, we cannot really reach what we aspire to be. So that is where the role of manufacturing sector. The second point, why it is also the suitable time or to capitalize this opportunity. We have been going through geopolitical issues. Lot of multinationals, lot of countries are worried about stable supply chain, and there the concept comes as China plus one. And India is very well placed. All these labor-intensive sectors in manufacturing vacated by China or others manufacturing giants are going to smaller places like Vietnam, Bangladesh, Mexico. They don't have the market to offer. They don't have the endowments like India has. So that is where it is an opportunity to capitalize. And also if you look at the growing economy, our domestic demand, you see, I'm sure you go through this information that, okay, the trade deficit with China is increasing, with other countries increasing in manufacturing. What are we importing from China? Capital goods, intermediate goods. It's 88% of the total imports. So there is huge demand right there in Indian economy. Even we don't have to depend on others. So that is where I think we need to focus on manufacturing. We have been trying to accelerate manufacturing. There are so many policy initiatives, whether it is Make in India, Gati Shakti, Digital India, performance-linked incentives. We have taken initiatives, but however, the success is kind of less than the desired. Still, we have the share of manufacturing 17%, where we are supposed to reach 25%. That is where the momentum. And when it comes to industries, we are doing well in few industries, whether it is automobiles, very recently in electronics and mobiles, which is part of it, information technology, but in certain industries where our strength lies is basically labor-intensive sectors, whether it is textile, headwear, footwear, leather, and all these labor-intensive sectors, I think there are a lot of opportunities to capitalize. In this context, the role of states really go up. It's geographically, and when it comes to the project implementation, it is always the states where actual implementation takes place. The purpose of this workshop is to take the best practices and also analyze the gaps that are coming on the way of manufacturing, and the whole purpose is to send out a message to states what they need to do. And of course, in the second session, we'll have representatives from different industries who would share the success, the issues, and what they expect from governments, both from the center as well as state. It's a very special day, I must tell. We're really privileged and honored to have Honorable Chief Minister. I think his presence adds significant value to this event. And we have distinguished guests, two great personalities, honorable members, Dr. Saraswat and Dr. Birmani. They are eminent scholars and policymakers. They have been part of the policy making for decades. In fact, we have all, like most of us, have grown up reading and going through their contributions. I'm very happy that we have Mr. Mukesh Chand Gupta here, who would really take forward the message. And of course, today the welcome address was supposed to be given by the CEO of NITI, Mr. BVR Subramaniam. We missed him, but he's the person who suggested that let's do it in Bhopal. I think it's time for Madhya Pradesh to take up in manufacturing. So it is his initiative, and we are sorry that we missed him.
And finally, I really thank all esteemed or distinguished members and participants coming from faraway places. Thank you so much. I hope we'll have a very productive and rich discussions in the coming 2 sessions. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभाकर साहू जी कार्यक्रम के परिचय के लिए। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे हम सभी को संबोधित करें। और आपने प्रदेश के विकास के लिए सुशासन के अर्थ को चरितार्थ किया है और निरंतर आपके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। तालियों के साथ हम आमंत्रित करें माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधन के लिए। नीति आयोग द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में, और इस वर्कशॉप का विषय भी बहुत अच्छा है, मैं समूचा मंच और आप सबको बधाई देना चाहूंगा। एक बार करतल ध्वनि से पूरे मंच का अभिनंदन कर दें। भारत के विनिर्माण में, खास करके विकास में प्रदेश की भूमिका, सहभागिता, ये सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत अच्छा है। और मैं एक तरह से आपके माध्यम से इस आयोग के बनने के कारण से यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहूंगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने सुशासन को लेकर के ये कितनी सुंदर दृष्टि रखी। अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, हम सब मिलकर के, जिनने शासन के सूत्र हाथ में लेने के बाद कितने प्रकार से अलग अलग सेक्टर में काम किया है। और अब जिस प्रकार से हम देख भी रहे, कभी कभी अपन कल्पना करें 2014 के पहले के दौर की बात करें, किसी दल विशेष की बात न करते हुए, यद्यपि पहले पंचवर्षीय योजना चला करती थी, उस पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर हम अपने अपने क्या क्या कैसे कैसे टारगेट लेते थे, लेकिन उसके कई बार हम ही मजाक बनाते थे, मखौल उड़ाते थे कि ये क्या है, कैसा होगा, कितना होगा। और अपने लिए तो हम अपने पता नहीं वो उस गुलामी के काल से कितने साल तक बाहर नहीं आ पाए। भारत में तो संभव ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये टारगेट रखने के लिए रखते हैं, इसका क्या लेना देना है। ये ज्ञान विज्ञान की बात मत करो, सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार चलाने के लिए सरकार के अलग तरीके होते हैं। और एक दो धारा अपने आप पूरे देश में दिखती थी, और उसके माध्यम से कई बार हमारा यहाँ का जो टैलेंट है वो स्वाभाविक रूप से यहाँ अपने घुटन महसूस करता था। और ऐसा लगता था कि यहाँ का ब्रेन, सारा दुनिया हमारे ब्रेन से आनंद ले रही, और हमारे यहाँ सारा जो है पता नहीं अंदर में अच्छा होते बावजूद भी सब खराब है, ऐसी भावना जो बनी थी। या इनको कोई संभालने वाला ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई सुधारने वाला नहीं। सरकार के लेवल पे तो एक बड़ा अच्छा एक पुराना चुटकुला भी चलता था। एक जगह ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा था, मंत्री जी अपने सिर का ऑपरेशन कराने में लेटे हुए थे टेबल पे ऑपरेशन करने के बाद उनको बेड तक पहुंचाया, उनका होश आया। और होश आने के बाद में मंत्री जी के पास डॉक्टर दौड़े दौड़े आए कि साहब आपको वापस ले जाना है। बोले क्यों? बोले आपका वो जो ब्रेन निकाला था वो तो भारी रह गया और खोपड़ी वैसे ही लगा दी आपकी। तो मंत्री ने कहा आप जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले मुझे वित्त मंत्री बना दिया है, वहां खोपड़ा नहीं लगाना। तो ये हमारे यहाँ इस प्रकार से जो मजाक बनते थे, चुटकुले चलते कि किसी को मंत्री बना दो, मुख्यमंत्री बना दो, और की पोस्ट पर बिठाओ तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलाना, जो चल रहा हो उसको चलाना, और चलाने वाले अलग और उनको दिखाना कुछ और। ये जो मजाक बनते थे, इन सब का जवाब मैं केवल एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा, और एक तो क्या ऐसे कुछ उदाहरण और भी जाएंगे। एक दुविधा बताऊं आपको इसके पहले की। आप अंदाज लगा लो कि हमारे इसी देश के अंदर, मैं नाम भी ले सकता हूं क्योंकि फाइनेंस की बात चल रही, नीति की बात चल रही, व्यवस्थाओं की बात चल रही, सुव्यवस्थाओं की बात चल रही। और ये बात भी सही है कि 91 की सरकार में यशस्वी, अभी जिनको भारत रत्न मिला है, नरसिम्हा राव जी, बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और उस समय के एक तरह से इन व्यवस्थाओं के लिए
मनमोहन सिंह जी की उस समय गवर्नर करके बाद में वित्त मंत्री करके आए, उनने काफी बदलाव भी लाए, लेकिन मनमोहन सिंह जी कहां चूक कर गए मालूम नहीं पड़ा। आप अंदाज लगा लो, एक चाय वाले ने कह दिया कि बिना पैसे का भी खाता खुलता है, कितनी बड़ी बात है। खाता खोलने में कोई पैसे की जरूरत लगती क्या? अब ये एक छोटा सा कदम लेकिन कितना